कुकिंग ऑयल की आप एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई आज के बाद से बेसिकली कुकिंग ऑयल पे बेसिकली 300% टैरिफ होगा, ठीक है? तो जाहिर सी बात है आपका जो लोकल स्टेट है ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर एंड दे विल बी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, राइट? आप कहते हैं कि जी बेसिकली ये गाड़ियों की आप बात कर लें, राइट? वी आर इम्पोर्टिंग लाइक ऑलमोस्ट $1 billion वर्थ ऑफ कार्स ऑल्सो बेसिकली एवरी ईयर, राइट? सिमिलरली आप चाय का देख लें, $1 billion की बेसिकली आप चाय भी इम्पोर्ट करते हैं. So I think we have gotten used to consumption of things that are imported, and we need to substitute that with local basically production. And there is nothing wrong in being slightly close. Iran ka aap example le lo. Iran is a country that produces really most of what is consumed in that country on its own because it has been a sanctioned country and has been closed off. India was like that for many, many, many decades before basically it opened up. So you've got to promote local industry and you've got to put basically some hurdles against, international competitors to come in and basically sweep your market. I'll give you an example. Take a look at basically our space. When there is a Bikea, why has the state allowed basically companies like InDrive or Yango to come in and essentially take money out of basically Pakistan and repatriate it? So your Bikea is making money and reinvesting it in Pakistan. Those guys are taking money and sending it abroad. Absolutely. देखें, आपने चाइना की तरह लोकल मार्केट को जो है आपने और लोकल इंडस्ट्रीज को जो है प्रमोट करना है. अब इज दैट गोइंग टू बी अनफेयर परहैप्स टू इंटरनेशनल कंपनीज? एब्सोल्युटली. लेकिन देखें ना, ये मुल्क में बेसिकली लोगों का बिहेवियर चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. आपने बेसिकली इजराइल के ख़िलाफ़ आप खड़े हुए हैं, आपने कोक पेप्सी पीना निस्बतन कम कर दिया है, गोरमे कोला, नेक्स्ट कोला, ये सब्स्टिट्यूशंस आ गए. So I think we need to find these substitutions so that basically money is not leaking out of the country. And if it's, if there is basically a deficit is कि dollar in versus dollar out. तो basically it needs to be equalized, not basically based on कि जी मैं एक perpetually जो है loans लेता रहूँगा और अपनी basically food subsidy चलाता रहूँगा. क्योंकि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो subsidy चल रही है actually food subsidy चल रही है, food and oil subsidy. लेकिन इसका मैं एक counter argument देता हूँ, right? So for example एक mindset यहाँ पे obviously there's that mindset कि imported चीज़ बेहतर है. ठीक है, so let's take that first thing. Everything imported is better, which is not often and not always true. The second mindset that exists here is basically जो एक feudalism का एक mindset चला आ रहा है for decades, in fact probably for centuries, that India did away with, but we haven't. So there is this culture that I'm a VIP, I'm special because I can go back to my village and there's these 1,000 people or 10,000 people and I have these hectares and acres of land where I am supremo. The local law enforcement doesn't apply to me. I'm controlling them. The local MPA, MNA is under my control as well, right? So I am the king of my little mini kingdom. I should be, when I go to the airport, I get protocol. When I travel in the city, I have a dala at the back with guards. I am given special treatment throughout. Why should I have to buy this local product that you speak of? I should be able to import it. Why should I give up on that because I own a large tract of land and I have these people I control? मैं तो मतलब it's not my right to do that. एक ये mindset भी है यहाँ पे. देखिए ना, आप imported goods मैं नहीं कह रहा completely बंद कर दें, आप उस पर basically tariffs लगा दें 500%, 700%, ऑटोमेटिकली बेसिकली उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी. सिगरेटों में आप देख लें, ठीक है, सिगरेटों में बेसिकली जब इन्होंने सिगरेटों पे टैक्सेशन इंक्रीज़ किया, इनकी इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो बेसिकली जो 300 रुपये की डब्बी थी बेसिकली डनहिल की, वो अब आ गई 700 रुपये पे, ठीक है.